कोई भी टॉपिक। You can take pasteurization, you can take Gujarat, you can take your my family. So आप my family में माइंड में बना सकते हैं, एनी टॉपिक, किसी भी टॉपिक पे. So it promotes active involvement when learners are making mind map, they are actively involved in researching that सारे कंटेंट कवर हुए या नहीं और हर एरिया से कवर हुआ है या नहीं. एंड सिंस एवरीबडी एन्जॉयज कलरिंग, सभी लोग कलरिंग एन्जॉय करते हैं, पिक्चर्स एन्जॉय करते हैं. मैं बच्चों को आजकल देखता हूँ वो लोग कट पेस्ट करके भी माइंड मैप बनाते हैं. इसमें माइंड मैप में काफ़ी एक जैसे कोऑपरेटिव लर्निंग बीएड में पढ़ाते हैं, कोऑपरेटिंग लर्निंग विद हेल्पिंग ईच अदर वेयर 2-3 पर्सन्स आर लर्निंग टुगेदर. मान लीजिए 4-5 लोग मिल करके एक माइंड मैप तैयार कर रहे हैं. सो उसमें काफ़ी एक टीम वर्क की भावना आती है, काफ़ी कोऑपरेशन की भावना आती है. ये भी हो सकता है कि इस तरह हम ये करें, मान लीजिए आपको 5-6 टॉपिक्स पढ़ानी या 30 टॉपिक्स पढ़ानी है और आपके क्लास में 30 बच्चे हैं. उन सबको बोलें कि उनको एक एक टॉपिक पे, एक एक कंटेंट पे माइंड मैप बनाना है और फिर वो शेयर करें, एक दूसरे को पढ़ाएं, एक दूसरे को एक्सप्लेन करें. सो आई विल से इट फॉस्टर्स कोऑपरेटिव एंड peer learning, and believe me, peer learning is one of the best form of learning. It assists all students in learning concepts and vocabulary because information is presented visually. What happens? It also, efficiency काफ़ी बढ़ जाती है. You look at a visual and something comes in your mind. इट्स ए ब्रेन कंपेटेबल लर्निंग. जैसे मैंने पहले ही बताया, ब्रेन लैंग्वेज नहीं, लैंग्वेज की ब्रेन वर्क्स विद सिंबल्स, विद पिक्चर्स. ब्रेन सो जो भी आप लैंग्वेज के फॉर्म में रिसीव करते हैं उसको before it goes to the brain, it is translated in terms of visuals. It translates in terms of electromagnetic signals, and that simulates the brain to make pictures. जैसे अगर मैं अमिताभ के बारे में बोलूँ कि अमिताभ, सो व्हाट कम्स इन माइंड इज़ हिज पिक्चर. अमिताभ लिखा हुआ आपके दिमाग में नहीं आता है. मैंने स्टार्ट ही किया था, बोला था डोंट थिंक ऑफ एन एलिफेंट. सो व्हाट कम्स इन योर माइंड इज़ एन एलिफेंट. दिमाग में लिखा हुआ नहीं आता है. डोंट DONT थिंक ऑफ एन एलिफेंट. इफ आई से 5, so what you get is picture 5, or 5 apple. What you get is 5 apple. So it's a brain compatible or brain conformity learning. Mind mapping closely mirrors our natural thinking process. It involves the whole brain because both left and right hemispheres of our brain are involved. Left and right, both hemispheres of the brain are involved when we are making a mind map. Improved comprehension. To create a mind map, students must be able to make content connections and make decisions about how to display the information in a meaningful way. This is very important. So, like suppose you are making, आप सेल पे एक माइंड मैप बना रहे हैं, सेल पे. सो सेल में पहले वो सारी चीज़ें आ जानी चाहिए. सो क्लासिफिकेशन पहले क्या है, प्लांट सेल, एनिमल सेल. फिर कैसे बनता है, क्या होता है, देन डिफरेंट कंपोनेंट्स, यूजेस. सो आप क्या करेंगे, एक माइंड मैप बनाने के पहले पूरी एक कंटेंट एनालिसिस करना चाहेंगे जिसमें आप ये बताना चाहेंगे, यू मे लाइक टू make a list of all the things mentally or on a piece of paper what all things are there. So उसके बाद you will try to present in a meaningful way. So ये cell becomes at the center. उसके बाद you can write historical perspective. So you may write who discovered
name of that person who discovered it. You can write incident or year. Then you can write how you can draw, or you can draw the diagram of a cell here. Types you can write, then plant, animal, you can have some diagram or some symbol. Then you can write use of cell or type of cell, etc., etc. So when you're making a mind map, you try to present the information in a very, very meaningful way. So to create a mind map, students must be able to make content connections. This is very important. As I said in the beginning, and the chain, how they are connected with each other. Mind map is making a chain of information, chain or sequence of information available in a very layman's language. See, what mind map we are talking today is very much modified and which is more scientific, but in the history of knowledge, we have always used mind map to make things much simple. Memory. Since mind maps symbolize concepts with short, easy to remember visual and linguistic clues, students are able to remember more of what they see and draw than what they read and hear. The language, I'll keep on telling, the language of mind as symbols, the language of the mind as picture, the language of the mind as visualization. So when we make, when students map symbolizes concepts with short, easy to remember visual and linguistic cues, students are able to remember more of what they see and draw than what they read and hear. It is always said, in 4 lines the whole education is captured. That is, I listen, I forget. I see, I believe, I do, I learn. So मैं सुनता हूँ, मैं भूल जाता हूँ. मैं देखता हूँ, मुझे विश्वास होता है. मैं करता हूँ, मैं सीख जाता हूँ. I listen, I forget. I see, I believe. I do, I learn. Mind map goes to the 3rd level where child is doing, actively doing, and they enjoy it. सबसे बड़ी बात है, बच्चों को पिक्चर, कलर, कटिंग, पेस्टिंग अच्छा लगता है. इवन माइंड मैप मैंने बहुत सारा छोटे बच्चों से भी कोशिश की है. तो आजकल मैं बच्चों को ये बोलता हूँ, नवरात्रि आ रहा है, सो उसका एक डेली मेकिंग ए डेली कोलाज, एक कोलाज बनाना, और वो काट करके पूरा अरेंज करने की कोशिश करते हैं. और फिर वो भी कि इसको कनेक्ट कैसे करें. 4, 10, 12 पिक्चर नवरात्रि के पेपर से काट तो लिया आज सुबह, फिर हाउ टू कनेक्ट इट, उसकी सीक्वेंसिंग क्या होगी, पहले कौन किससे कनेक्ट होगा, उसके बाद कौन, उसके बाद कौन. इस तरह से इट्स ईजी एंड एन्जॉयबल. चिल्ड्रन, बच्चों को काफ़ी मज़ा आता है. ELL students, English language learning students, information is presented visually rather than verbally, therefore assisting ELL students in grasping concepts, content and vocabulary. आसानी हो जाती है. They enjoy, they try to break the vocabulary also and then try to visualize. Like say, one day I was reflecting on inflation. So how to remember what is the meaning of inflation. So जब फुटबॉल में से सिक उड़ना, जब फुटबॉल में से हवा निकाल दिया वो लो हो जाता है. So inflation is when money is going down. So it's creating a visual connection. Why you should revise? Your short-term memory can only hold 7 bits of information at a time. Revision helps reinforce your learning to help you prepare for your exams. Within 30 days, we only remember 20% of the information learned. देखिए, no, as I said, I listen, I forget. मैं सुनता हूँ, मैं भूल जाता हूँ. Without revision, you will have wasted 2 years of your entire life. If you don't revise, 30 दिन में 20% जो आप केवल 20% ही आप रिकॉल कर पाते हैं, याद रख पाते हैं.
विदाउट रिविजन यू विल हैव वेस्टेड 2 years ऑफ योर एंटायर लाइफ. आपने 2 साल बर्बाद कर देते हैं. एक्टिव रिविजन. Research shows that active revision techniques such as making mind maps, revision notes, or practicing past papers is the most effective way of preparing for an examination. Here let me tell you, even I always say beyond the mind map. Beyond the mind map is, आप एक सिंपल सा टेक्निक फॉलो करना चालू करें. एक कोई पीरियड आपकी ख़त्म हुई, पीरियड ख़त्म होने के बस बाद 2 या 3 मिनट के लिए दिमाग में मेंटल रिवीजन करने की कोशिश करिए थ्रू पिक्चर्स. एक पूरे सीक्वेंस में वो जो 40 मिनट में कवर किया गया, आप देखेंगे आप कभी नहीं भूलेंगे. सो मेंटल रिवीजन थ्रू मैप्स, क्या क्या हुआ, लाइक ए पिक्चर. एंड देन अगर आप और रीइंफोर्स करते हैं, ट्राई टू टीच समवन थ्रू विजुअल्स, थ्रू एक्सप्लेनेशन. सो रिसर्च शोज दैट एक्टिव रिविजन टेक्निक्स सच एज मेकिंग माइंड मैप्स, रिविजन नोट्स और प्रैक्टिसिंग पास्ट पेपर्स इज द मोस्ट इफेक्टिव वे ऑफ प्रिपेयरिंग फॉर एन एग्जामिनेशन. Before we go further, let me give you 1 minute and try to make a mind map. Try to add on to your mind map which you have created in the process of our lecture some more things. Mind map ki mind map. I'm sure you are enjoying mind map ka mind map. Now, key features of mind maps. The process starts around a central idea or picture. It can be anything. It can be you are learning sarvanam or noun, so noun or sarvanam becomes a central idea. Key themes are established through branches with sub branches. एक लिया आपने, फिर उसका एक और ब्रांच, फिर उसका एक और ब्रांच, फिर उसका एक और ब्रांच, एक एक इन्फॉर्मेशन सीक्वेंस में आते जाते हैं और आप उसको जोड़ते जाते हैं लाइक ए ब्रांच. की टर्मिनोलॉजी इज़ यूज्ड. सिंगल वर्ड्स और फ्रेजेस, ज़्यादा लाइन में नहीं लिखते हैं. यू हैव टू हैव वर्ड्स और फ्रेजेस, नॉट मोर देन 1 सेंटेंस. जितना शॉर्ट में लिखेंगे आप उतना अच्छा है. थीम्स आर कनेक्टेड थ्रू कलर्स, इमेजेस रीइंफोर्स मीनिंग. इट अलाउज यू टू freely associate and link ideas. Not just pretty pictures. Mind mapping is about the ability to analyze and make connections, to use knowledge effectively, to solve problems and think effectively. It requires skills to search out meaning and impose structure. It goes beyond learning information by rote and equips students to deal systematically with problems and adopt a critical attitude to argument and any information. When you start writing an exam and there's a question है, आप पूरे आंसर को पहले दिमाग में एक माइंड में बनाने की कोशिश करिए, उसके बाद फिर लिखिए. आप देखेंगे आप ज़्यादा बेहतर लिख पाएंगे. Like suppose I say you have to write an essay on our Prime Minister's US visit. So before writing, before putting in words, create a mind map. क्या क्या है उसमें, and then it will take hardly 1 minute, but your essay will be much better. A challenging technique. Mind maps provide a method of structuring note-taking which moves away from extracting or reworking information. The creation of a mind map is challenging, creative, and interpretive. It requires an interaction and understanding of new information which can be missing from conventional approaches. Mind mapping. I thought of many activities. Think about nature in terms of the architecture of the following: a flower, a leaf, lightning, a tree. Okay, architecture. Is there a similar pattern you can observe? चारों में कोई
अगर आपको अच्छा माइंड मैप बनाना सीखना है ना, तो 4-5 कोई भी चीज़ ले लीजिए और वो देखिए कि उनमें क्या कनेक्शन है, उनमें सिमिलरिटीज़ क्या हैं, उनमें एक कॉमन पैटर्न क्या है. इससे दिमाग की फ्लेक्सिबिलिटी, फ्लुएंसी बढ़ती है, विच इज़ रिक्वायर्ड फॉर क्रिएटिव थिंकिंग. क्लोज योर आइज एंड थिंक अबाउट योर बेस्ट फ्रेंड. व्हाट डू यू फाइंड? इमीडिएटली फिल्टर होके आ जाता है. सो देखिए इसमें कॉमन पैटर्न क्या है. आई शो इट वंस अगेन. ये देखिए, कॉमन पैटर्न इवॉल्व करने की कोशिश करिए. Write on a piece of paper in linear form 16 words or ideas associated with the word college in the following format. These are all way of increasing fluency of the mind, क्योंकि माइंड मैप के लिए फ्लुएंसी, माइंड की फ्लुएंसी बहुत ज़रूरी है, ताकि वो चीज़ों को कैप्चर करके आपको कनेक्ट करने में हेल्प करे. Radiant divergent thinking. Notice when we used the spokes of branches radiating from the word college, more ideas and concepts emerges in contrast to the conventional linear format. Your thinking begins to grow and expand rather than being confined. How to construct a mind map? First, put main idea in center. जैसे मैंने पिक्चर में दिखाया. Then draw quickly. Use unlined paper or a chalk whiteboard so there are no boundaries. This activity is a brainstorming activity, so ideas are expressed quickly. Use capitals. Use of capital letters helps some students concentrate on writing key points. Leave lots of space. This make it easier to add more later. Look for means make leave spaces, keep things spacious. Look for relationship. To show connections between ideas, use branches, arrows, colors and groupings. Step 1. Use an A4 blank sheet or A3 if available. Draw the mind map horizontally rather than vertically. This enables more space to work with. Like जैसे मैंने किया, दिस इज हॉरिजॉन्टली, यूजिंग पेपर हॉरिजॉन्टली. दिस इज यूजिंग पेपर वर्टिकली. अगर आप ऐसे यूज़ करते हैं, सो दिस इज वर्टिकल यूज. दिस इज